Okay, so we have discussed in the last class regarding the stages. तो आज हम will be starting with stage 2. Okay, so in stage 2, as you can all see in the slide, it is identifying and involving the diverse stakeholders in the research. तो आज हम इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे. तो अच्छा, बाय द वे, किसी भी पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल को किन किन चीजों की मतलब एक तरह किस किस चीजों का इल्म होना चाहिए, है ना? उसको क्या क्या आना चाहिए अगर आप एक अच्छे पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल बनना चाहते हैं या कल को हेड बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं. तो 4 चीजें, है ना, उनको उनको 4 चीजों में महारत हासिल होना चाहिए. उसमें से भी एक पार्ट ये है, ठीक है, जो मैं अभी डिस्कस करूंगा. बट वो क्या होना चाहिए, वो 4 चीजें क्या क्या है? यस, यस डॉक्टर हुसैन, व्हाट डू यू थिंक? uh, mm, a public health researcher should have the ability to do all statistical analysis. Okay. He should be aware of what type of, he should have the ability to formulate a good research question. Okay. No, I'm not talking about just a researcher, Dr. Hussain. Okay, yes, Okay. researcher is one part. He will be doing the research. And he should be his mind or his ability should be exploratory in nature. That means he should have the ability to analyze, to study. He should be in the habit of going through research papers. Or what are the public health activities being carried out in different facets of public health, and he should be a good analytic. So suppose if I tell you tomorrow, suppose USAID, okay, has or Doctors Without Borders, so wants to start up some project in West Bengal, in Calcutta, and they want to take a director level person in this. Okay, and you go to them, you will face an interview, and they ask you, like, you want to become the director. So what type of a skill set, or when you will be basically working with them? Okay, so what type of skill set? The skill depends on the various types of posts you will be dealing with. So suppose I am saying like it is a director level position. Director, that means in a director level position, in that position you must have a sufficient experience of in your domain of public health. You have been working for some quite long time. Okay. You have a very good perspective on public health activities. I mean, particularly at the ground level. Okay. Which you should have a very good. You should have a good thinking of what will be the goal, or what would be the aim and objective of the projects, and what are the different way you are going to, I mean, method you are going to carry out. You should have a very good, you should be a good analytic. You should have management skills also. Though in management, I'm very poor, but anyway, you should have a you should have a link with government body and NGOs and various other stakeholders who are working in different domains of public health. And you should have a good relation with them, and you should have also very good knowledge on which aspects they are working. You should have a good management on financial. I mean, finance also, how to make budget and all that, and what will be the best way, a cost-effective way of launching any national health programs or cooperating with the government in various programs. So these are the things. I mean,
not all, but some of the Okay, qualities. no, fair enough. What you have mentioned two or three things, which is definitely want to. I'll just discuss this way. Yes, Bevicha, what do you think? Like, suppose there's a director level position, because see, in the coming years down the line, you all will be aspiring for these positions. Okay, so you might start in a different manner now, and in the coming years down the line, so you should also know like how the career has to be progressed and how everything. So before I take this point, identifying and involving diverse stakeholders in research. So because it is something related with skill set. So that's why I just focused on this question, that what type of what is the expectation of at a director level position in a public health project that a person is looking at or the organization is looking at. Yes, Bebicha, क्या लगता है आपको? Bebicha, are you there? Yes, sir. Yes. क्या आपको क्या किस टाइप का स्किल सेट होना चाहिए आपके पास में डायरेक्टर लेवल पोजीशन पे जाने के लिए? क्योंकि यहाँ पे ना the second stage of a PR project is to identify the stakeholders and facilitating the participation in research. तो किस टाइप का स्किल सेट आपको चाहिए? Sorry, sir. I could not get understand because now question. only I joined the class. Okay, no issues. Okay, yes, Rajiv. हाँ सर. Suppose you have understood my question, huh? So Dr. Yes, Hussain sir. has given an elaborate answer for the same. What is हाँ your हाँ हाँ. viewpoint on this? What is your viewpoint? So one should have good teamwork skills. Teamwork skills, okay. Then the interpersonal relationship skills with the employees should be very good. Okay. So One should also teamwork, have interpersonal skills, okay. So you mean to say whether it's teamwork or interpersonal, it is majorly to do with people, sir. isn't it? Majorly to do it. This is also Dr. Hussain also said the same thing. It has to do Yeah, with sir. people. Okay. One should be very flexible, and adaptability should also be present, and a strong analytical mindset. Analytical mindset. Okay. Okay, fine. So And analytical mindset, about the various projects. Okay, fine. Yes, Ujjwal, anything else do you think? सर एक्चुअली मेरे हिसाब से तो सर एक्चुअली ये पब्लिक हेल्थ इंटायर पॉपुलेशन के लिए टोटल इंटायर होल पॉपुलेशन Okay. Actually involve all sector of societies, other areas of government, private sector, NGOs. नहीं, वो तो स्टेक international. होल्डर हो गया, बट मैं ये कह रहा हूँ सपोज एक डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने बंगाल के अंदर एक सपोज एक प्रोजेक्ट शुरू करना है और उसने वैकेंसी निकाला है, ठीक है? वैकेंसी निकालने के बाद में आपने अप्लाई किया उसके लिए, तो किस टाइप का स्किल सेट मतलब दे आर लुकिंग एट? क्योंकि देखिए, मान लीजिए अगर कोई रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी होगा, कोई इम्प्लीमेंटेशन करना हो, तब भी तो रिसर्च करना जरूरी है ना? तब भी तो आप कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई करोगे। तो अब क्या है कि देखिए, आप सभी वो बात बोल रहे हैं, बट देखिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू ओवर हियर इज, अपनी बात को संक्षिप्त में, शॉर्ट में और कितने क्लीन तरीके से आप कर सकते हैं, है ना? दिस इज व्हाट द नॉलेज बेस विल फॉर्म, है ना? दिस विल बी योर बैकग्राउंड कि भाई ठीक है, मैं अपनी बात को बहुत ही स्पष्ट तरीके से एंड इन अ वेरी स्मॉल it has to be really very sharp rather than beating around the bush, so it has to be very sharp. Okay, yes, Yumkhaibam, anything from you? What do you think? Sir, directors should have a very good communication skill. Okay, again communication with the people, है ना? तब भी हम people की communication किससे करोगे भाई? स्टेक होल्डर भी people है, ऑर्गेनाइजेशन भी people है, right? Yes, sir. So ये सारा का सारा ये है. Okay. And they should have a very clear knowledge about the surrounding on which they are going to work, and they should have empathy for the people. Okay, again people. Okay, fine. So what I देखो, आपने सारी जो बात की आप सबने, ठीक है, तो मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ. अगर मैं कभी भी डायरेक्टर बनना चाहूंगा
या मेरे अंदर एक अच्छे बहुत जबरदस्त पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स के स्किल होने चाहिए, वो 4 स्किल सेट की मैं बात करूंगा। चाहे वो आप इसको रिसर्च में इस्तेमाल कीजिए, whether you are going to work at a managerial position, at the top management position, or at even the number one is managing people. So you should have the skill of managing people. Okay, so all of you write it down. So managing people is one skill set which every public health professional should have. Now, whether these people are within the organization and outside the organization, because why it is so, I'll come to this point. क्योंकि ये जो second point है बहुत important point है. So managing people, because you have to get the things done. आप सब कुछ खुद नहीं करेंगे. मान लीजिए अगर statistics भी है तो कोई आपका टीम मेंबर का बंदा कुछ करेगा, but you should know how to interpret. अब आप ठीक है, टूल्स अगर आपको पता है, बट क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा. यही मैंने बोला ना आपको लास्ट क्लास में, अगर देश का पीएम सिर्फ चुनाव ही करता रहेगा तो भैया देश कब चलाएगा भाई? ये भी तो बात है ना कि देश कौन चलाएगा फिर? अगर आप सिर्फ हर टाइम इलेक्शन मोड में रहोगे तो फिर हाउ यू आर गोइंग टू रन द कंट्री? और फिर उसी का असर होगा कि धीरे धीरे इकोनॉमी नीचे गिरेगी, बाकी चीजें गिरेगी, और उसका एक दिन एवरीथिंग विल कोलैप्स. So similarly, what you need to do is you will have different categories of people in an organization. There will be people for communication, there will be people for statistics, there will be people for projects, there will be people for delivery. But you should know, you should have that type of a charisma into you, that how you should know like how to get the things done from the people. Is it clear? Is it clear to everyone? Okay. The second is you should know how to manage the projects. अब आप नेचुरली कोई भी पब्लिक हेल्थ ऐसा नहीं चलता, उसमें प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं. अब उस प्रोजेक्ट आपको कभी हो सकता है वो सैनिटेशन का प्रोजेक्ट हो सकता है, कभी वो लिटरेसी का प्रोजेक्ट हो सकता है, वो हेल्थ का ट्यूबरकुलोसिस का प्रोजेक्ट हो सकता है. तो तभी मैंने आपको एक चीज बोली थी कि वो जो प्रोजेक्ट्स की जब हम बात करेंगे तो हमको ये फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज भी होना चाहिए. अगर हम नहीं होंगे तो हम किसी और से वो एक्सपर्टीज समझ सकते हैं, बट एक खुद के अंदर एक कॉमन सेंस होना चाहिए, सो दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग डन इन दैट प्रोजेक्ट. You got the point? So you should know how to manage the project. Now there are various parts of a project that will come into later as we'll understand all these things, but means preferably when you know how to manage a project, so how the project has to be managed, the project has to be managed via the people. Okay, there will be people in the government, there will be people within your own organization, there will be people, okay, at who are basically funding. So you know what is the progress of this. That's why managing the people and managing the project will go hand in hand. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then और क्या हो सकता है? The third skill set, you should know how to manage the processes. कोई भी प्रोजेक्ट अपने आप नहीं होगा भाई. वो प्रोजेक्ट को करने के लिए देयर आर सर्टेन टूल्स, उसको सिस्टम और प्रोसेसेस होते हैं. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको, जैसे पब्लिक हेल्थ में एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड होता है हेल्थ सिस्टम्स. अब हेल्थ सिस्टम्स, किसी भी कंट्री का एक हेल्थ सिस्टम जो है वो 5 अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बनता है, और उन कंपोनेंट में अगर देयर इज नो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, देन द सिस्टम वोंट वर्क. इट इज लाइक योर डाइजेस्टिव सिस्टम, योर एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो देयर हैज टू बी वेरियस actors who are playing their role together. Those actors will form a movie. That movie should be managed in, वो 3 इडियट्स की तरह अगर मूवी होगी तो सभी एंजॉय करेंगे. ठीक है, और अगर वो मूवी इतनी पकाऊ मूवी होगी कि आप बोर हो रहे हैं, आप तो आपका इंटरेस्ट भी लूज हो जाएगा, आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, आपका पैसा भी वेस्ट हो जाएगा. डू यू ऑल एग्री और डिसएग्री? Agree, sir. Agree. Okay, so this is a very important part. So managing the people, managing the projects, managing the processes. ठीक है, ये 3 हो गए. और जो चौथा जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैनेजिंग द बजट्स. क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे कोई भी पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट जो है, हर चीज का एक कंस्ट्रेंट बजट होता है. ऐसा नहीं है कि भाई, मतलब वही, तभी मैंने आपको पिछले बार में ही बात की सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. उसी तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट से चीज निकल के आई, व्हाट इज द बजट एलोकेशन. वो बजट में वो आपका शू स्ट्रिंग बजट के ऊपर आपको वो चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी. यहाँ पे इकोनॉमिक्स का रोल आता है. इकोनॉमिक्स का मतलब ही यही होता है कि आप छोटे से छोटी, मतलब आपके पास में अगर रिसोर्सेस हैं तो उससे आपको बड़े से बड़ा आउटपुट आप या आउटकम्स आप कैसे करके मैनेज करोगे.
ठीक है ना। तो छोटी चीजों से बड़ी चीजों को मैनेज करना वही स्किल सेट है, वही आर्ट है। अगर वो करना जानते हैं आदमी तो फिर आराम से वो चीज को जाए, तभी आपकी वैल्यू है, तभी आपको टॉप पोजीशन पे लिया जाएगा। वरना बड़े बजट के साथ में बड़ी चीजों तो कोई भी अचीव कर लेगा। यू गॉट द पॉइंट। सो तो अब यही है कि आज की डेट में, जैसे मैं पॉलिटिकल सिनेरियो में पॉलिटिक्स को इकोनॉमिक्स को क्यों साथ में लेता हूँ, रीजन बीइंग बिकॉज, क्योंकि देखिए अगर आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अगर फेवरेबल नहीं होगा तब तक आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं हो सकता है। बिकॉज दिस, क्योंकि आपका पब्लिक हेल्थ का प्रोसेस जो है वो अलग से नहीं, ठीक है। मैं आपको अभी एक एग्जांपल समझाऊंगा तो उससे आपको ये बात और ज्यादा क्लैरिटी से यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स मोर क्लियरली। सो व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर, four type of skill sets are very much required for any public health professionals. That is managing the people, managing the project, managing the processes. So P cube, so I have named it as an acronym P cube, that is P raised to power 3, okay, and B, okay. तो पब तो ना P cube B, P cube B, तो P cube B is the skill set that every person should know। और इसी पे ही आपको धीरे 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 इसी स्किल, इन 4 स्किल सेट पे आपको काम करना पड़ेगा ताकि आप एफिशिएंट पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट बन के निकले। और उसको करने के लिए फिर मैंने आपको जैसे बोला था कि अगर मान लीजिए आप किसी भी एक डिजीज, आप कोई भी डिजीज ले लीजिए, आप ट्यूबरक्लोसिस ले लीजिए, आप HIV एड्स ले लीजिए, आप टॉपिकल नेग्लेक्टेड डिजीज ले लीजिए, आप मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ ले लीजिए, आप हेल्थ सिस्टम्स ले लीजिए, आप मोबाइल हेल्थ ले लीजिए, आप ई हेल्थ ले लीजिए, कोई भी आपको एक डोमेन नॉलेज आपको अपना तैयार करना पड़ेगा। उस डोमेन नॉलेज के हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका मैग्नीट्यूड ऑफ द डिजीज पे, उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिजीज पे, उसका क्यों, कहाँ, कब, कैसे, क्या, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, है ना, एंड व्हाई के ऊपर यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस। देन यू कैन कॉल योरसेल्फ एज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टीज अप टू 50%। The rest 50% will be achieved when we understand the economics of it. That is, what is its impact on the people and how you are going to, magnify its impact by doing the positive interventions. Here you should have the proper skill set about the project and the processes. और just last and not the least, वो आपको फंक्शनल स्किल्स चाहिए होता है। तो फंक्शनल स्किल्स करने के लिए जब आप इस बैकग्राउंड के साथ में कल को कोई पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट के अंदर आप लाइव काम करेंगे, you should know how to use the tools. For example, some of the tools I've just put it on the WhatsApp. Have you gone through it? आपने नाम देखे उसके just now before the class? So one of the tool that I used is log frame, which I gave. Have you all gone through that the WHO document that I've put it in the group in the last class regarding the log frame? Yeah, we have gone through, but we need to discuss. There are so many. Yeah, we will discuss. We'll discuss. I just yeah. because I see I'm in a habit of using all these tools in between so Yeah. that you can correlate, and then we will take this tool as a whole. But down the line, again and again and again, what I'm trying to do again and again is hammering your mind. So one day what will happen, you will all be recognizing all these tools very efficiently. Okay, because there will be these of tools you will be already studying in your second year. Okay, but then before that, what I want is in the first year itself, if you get acquainted with the concepts, when you get acquainted with the tools, tomorrow if you are working with some organization, you came across, then okay, this is this. Okay, then it will give you a holistic understanding about the entire process. Basically, you should be aware of. Yes. The basics should be in your mind. Oh, that yes. We have heard this word somewhere. Somewhere, of course. Yeah. अब वो पहला वो कहेंगे जब हम सेकंड ईयर में आएंगे तब हम पढ़ेंगे, सो इट वोंट मेक एनी सेंस, है ना। तो वो ठीक है, वो तो तब होगा। तो बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको पहले से इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है ये दीज आर सम ऑफ द टूल्स दैट इज बीइंग यूज्ड, then we will be doing something. So then what I was telling, yes, so उसी के लिए जैसे मैंने लॉग फ्रेम बताया, गैंट चार्ट बताया, then business process mapping notations I've used, balance scorecards क्या होते हैं, incentives क्या है, feedback क्या है, budgeting क्या है. So these are the then these things are used very very commonly among all public health projects. So you should know, you should have a very good
understanding, though, when you will understand these tools, you will also learn about the processes. And then your functional skills will be developed when you start working on these tools in some project. Okay, and then your whole knowledge will be totally amplified. And then the last but not the least, the three, once you have the people, the projects, the processes, and the budgeting, so ultimately it all has to culminate into management. That is how you get the things done from the. तो ultimately कोई भी जो NGO या organization है, उसके अंदर आपको तीन चीजें वो आदमी मतलब ये organization is going to look for you. Number one is the management. That is how you manage the things with the people, how you get the things done. Second is like, so it is like, what I would say, management is basically like an engine of a car. Okay, वो इंजन कितना स्मूथ है, कितना एफिशिएंट है, कितने कम टाइम में वो काम कर सकता है, वो 0 किलोमीटर पर आवर से 150 200 किलोमीटर पर आवर कितने 3 सेकेंड्स में ले सकता है, तो 1 मिनट में ले सकता है. So that management skills has to be quite appropriate. The second is your leadership. अब ठीक है, मेरी गाड़ी तो स्टार्ट हो जाएगी, बट मुझको डेस्टिनेशन भी तो पता होना चाहिए ना, कि मैं भाई वो पाइपर की तरह मैं सबको डुबो के ले जाऊं ऐसी जगह पे. ले तो मैं जा रहा हूँ, बट वो सही डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ या गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ. So vision of a leader is very, very important. So leadership is all about vision and mission. That's why I use this. We have discussed in details in the last class, है ना, vision and mission. तो इसलिए मैनेजमेंट की नॉलेज आपको होना चाहिए, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए. और जो थर्ड important that is governance. That is all about accountability. For example, if you are taking funds from somebody, then you are accountable for them. If you are taking a vote from the people for mandate, तो then you are accountable to the people. So ऐसा नहीं होता कि भैया आपने कुछ भी ले लिया और उसके बाद में आपने अपने वादों को पूरा नहीं किया, and you are not accountable to the people. So that's why I use a lot of examples of politics and economics, because this is in the same manner. But here this is the public health projects will be particularly defining about the various social issues or the issues which is affecting the lives of a population at large. And here in public health, it is basically dealing with the public health issues. Okay, so is it all clear to everyone? These points are all clear? हाँ sir, हाँ sir. Okay. So you have said this PQB, P for people. P for PQB, P for people, P for process, P for project. Oh, okay. And B for budget. Yeah. Okay. तो ये एक डब्बे में, ये ऊपर वाले एक डब्बे में हम बना देंगे कि these are the 4 things which a public health project professional should know. And उसके नीचे वाले डब्बे में हम बताएंगे कि इन चीजों से आप अल्टीमेटली क्या, ये चीजें किस तरीके से वर्क कर रही हैं. अगेन M for management, okay, L for leadership, yes. And A for or G, MLG, okay. MLG stands for management, leadership, and governance. Governance is basically related with accountability. So this is your total public health that will be studying in these 2 years. वो जो फिर से PQBL MLG. हाँ, तो आप 2 डब्बे बनाइए. सबसे ऊपर एक डब्बा, एक ना लंबा रेक्टेंगल बनाइए. रेक्टेंगल में आप 4 ब्लॉक्स बना दीजिए. ठीक है. 4 ब्लॉक में, पहले ब्लॉक में लिखिए P, सेकंड ब्लॉक में लिखिए P, तीसरे ब्लॉक में लिखिए P, और ऊपर लिखिए P raised to power 3, that is P cube. ओके सर. तो पहला P का मतलब होता है people, दूसरे P का मतलब होता है project, तीसरे P का मतलब होता है process. ओके. People, project, process. चौथे डब्बे में लिखिए B for budget. ओके. तो ये हो गया 4. नीचे और एक डब्बा बनाइए, उसमें 3 खाने भरिए. अगेन रेक्टेंगल. यस सर. ठीक है. पहले डब्बे में लिखिए M for management, L for leadership, L for G leadership, for governance, और G for leadership के governance. बाद में G for governance या accountability. और जो दूसरा डब्बा है उसके सामने लिखिए विजन. ये विजन होता है भाई, क्योंकि अल्टीमेटली
आपको बनना कहाँ है, कहाँ जाना है, प्रोजेक्ट को कहाँ तक लेके जाना है, ये सब इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके सर। और जो ऊपर वाले आपने 4 पार्ट बनाए, पीपल, प्रोसेस, प्रोजेक्ट, है ना, और इसको लिखिए मिशन, क्योंकि ये अगर प्रोसेस ही ठीक नहीं होगा तो आप अचीव कैसे करोगे? अब क्लास में अगर फर्स्ट आना है और बहुत सारे IITian बच्चे के लेवल के बच्चे हैं, तो ये थोड़ी ना होगा कि एक दिन होके सडनली बोलो यूरेका और आपके दिमाग में ज्ञान भर जाएगा। उसके लिए आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। यू हैव टू गेट अप एट 5 o'clock in the morning, then you have to go and get fresh up, then you have to take out your books, you have to study for 2 hours in the morning, you go to school, then you come back, you make itinerary, again you take out the book, isn't it? तो एक रणनीति बनानी तो जरूरी है ना। अब बोल रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो अपने आप थोड़ी ना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी भाई, या इंडिया थोड़ी ना सुपर पावर बन जाएगा कि अपने आप चाइना में 5000 यूनिवर्सिटी, आपके पास में 500 यूनिवर्सिटियां, वो भी एकदम घटिया यूनिवर्सिटीज, तो कहां से होएगा? सो हाउ यू आर गोइंग टू हाउ यू आर गोइंग टू बिकम द वर्ल्ड लीडर इन साउथ ईस्ट एशिया? बताओ आप। अब ये पुतिन भाई ने इतना बड़ा वॉर कर दिया, ये कर दिया कि भाई हम यूक्रेन को ये मजा चखा, और आज उसका आज एक रूबल का आज 133 रूबल का $1 का रेट चला गया है इन 10 days। तो भाई आपने तो अपनी ईगो के चक्कर में यूक्रेन का भट्टा बैठा दिया, एक कंट्री को तबाह कर दिया, और बदले में लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि बेवकूफ। और आज मतलब अगर महंगाई होगी तो हु इज गोइंग टू बियर? द पीपल। हाउ द PM और द अदर पीपल, बिकॉज उनके पास तो वैसे इतने खजाने बड़े पड़े, तो हु इज गोइंग टू बी द वर्स्ट सफरर? द पीपल। सो पीपल इन यूक्रेन आल्सो सफर्ड, पीपल इन रशिया आल्सो सफर्ड। उसका डैमेज बहुत इकोनॉमिकल था और एज वेल एज टर्मोइल भी था, क्योंकि 10 लाख पीपल हैज टू फ्लेड द कंट्री। जस्ट इमेजिन कीजिए, आपके घर में छत है, आपके घर में सब कुछ है, और सडनली आपको ये बोला जाए कि भैया घर से निकलना है, बैंक को छोड़ना है, फ्रिज, और आपको ऐसी जगह पे जब आपको खाने का भी ठिकाना नहीं। जस्ट इमेजिन द प्लाइट ऑफ पीपल। और वहीं पे दूसरी जगह पे कि भाई आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, पर आज वो 5 लाख की वैल्यू 2 लाख रुपए हो गई है, तो 2 लाख से आप कितना दिन चला पाओगे? तो आपकी भी सिचुएशन टाइट हो जाएगी, पर अभी नहीं होगी, हो सकता 2 महीने बाद हो जाएगी। एग्जैक्टली, isn't it? Yes, So sir. you have to be very calculative। ये चीजें आपको इकोनॉमिक्स और ये सब चीजें, इसलिए अगर if you are not, that's why I always tell, okay, what is the purpose of data? Data has to be converted into knowledge, and that knowledge, okay, data gives information has to be converted into knowledge, and knowledge into wisdom। वो wisdom सिर्फ PM या CM बन जाना से वो wisdom नहीं आ जाती है, वो विजनरी या स्टेट्समैन उन्हीं लोगों को। इसलिए पुराने टाइम के लोग, गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये लोग ऐसे ही नहीं थे भाई। अगर आप इनकी, यू हैव टू रीड अबाउट देम एज देयर पर्सनालिटी, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ मच ग्रेट दे वर। दे वर ऑल पीपल ऑफ सब्सटेंस। ऐसे ही नहीं इंडिया को आजादी मिली थी भाई। यू सी, बिकॉज देयर इज ऑलवेज, आप US की हिस्ट्री पढ़िए, आप कहीं की भी हिस्ट्री पढ़िए, but you have to understand, because see, this is basically general knowledge, and general knowledge का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ, क्योंकि हर चीज का इंफॉर्मेशन आपको वो यहाँ पे काम आएगा। हिस्ट्री क्या थी, वो डिजीज का बैकग्राउंड था, कहाँ से आया, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट क्या है, यही तो स्टेक होल्डर है। डाइवर्स स्टेक होल्डर का मतलब क्या है? तभी मैंने आपको पिछली क्लास में एक चीज बोला था, ऊपर से देखो, नीचे से देखो, दाएं से देखो, बाएं से देखो, डायगनली देखो, इधर देखो, उधर देखो, टाइम लगाओ, चीजों को सोचो करने से पहले। प्लान वेल बिफोर एग्जीक्यूशन एंड देन एग्जीक्यूट द प्लान वेल। बट प्लानिंग में टाइम लगाओ भाई, 4 महीने तक प्लान टाइमिंग लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट देन चीज अच्छी निकल के आएगी। बट विदाउट करके, जैसे इंडिया में एक तकिया कलाम चलता है, देखी जाएगी, विल सी, विल डू इट एंड देन विल सी। सो विदाउट थिंकिंग व्हेन यू डू इट एनीथिंग, then definitely there will be consequences। All of you agree? Yes, sir, 100%. Okay, so now see, the second stage in a PR project is to identify the stakeholders। Who are the stakeholders? किसके लिए आप काम कर रहे हैं भाई?
ठीक है, अब आपका विजन मिशन होगा, कौन है लाभार्थी। अब जैसे अब अभी गवर्नमेंट ने बोला, अब ये जो यूपी का अभी रिसेंट इलेक्शन हुआ, अब बताओ मतलब ये एक लोगों की इंटेलेक्ट को इंसल्ट। रीजन बीइंग, पिछले 8 साल में सारे पैरामीटर्स में इंडिया हैज गॉन वेरी पुअरली, हैज फेयर्ड वेरी पुअरली। यू टेक एनी इंडेक्स, लोग गरीब हो रहे हैं, पेट्रोल के प्राइसेस महंगे हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इकोनॉमिक संभल नहीं रही है, यहाँ पे जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। बट उसके बावजूद भी ये, क्योंकि एक समाज का एक वर्ग 23 करोड़ आदमी मतलब गरीबी रेखा के नीचे चला गया है, 23 मिलियन, सॉरी, 2.5 करोड़ आदमी। But still, what does it show? Because people does not understand the basic issues. इंडिया में पॉवर्टी इतना ज्यादा है। अब आप एक गरीब आदमी को इतना गरीब बना दोगे और फिर उसको 5 किलो चावल अनाज दे दोगे, नौकरी उसको मिल नहीं रही है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 54,000 करोड़ रुपया बजट में से एलोकेट किया और बोला दे दो भैया, इलेक्शन आने वाले। अभी सबने पेट्रोल प्राइसेस 90 रुपए तक कर दिया। अभी जैसे ही अभी आप देखना 2-3 दिन में पेट्रोल के प्राइसेस 22 से 23 रुपए बढ़ने वाले। तो फिर गवर्नमेंट कहती है स्कूटी दे दो भाई, लोगों को स्कूटी दे दो, बच्चों को स्कूटी दे, बहुत अच्छी बात है, दे दीजिए आप स्टेक होल्डरों को स्कूटी। स्टेक होल्डर कौन है? बच्चा। कौन दे रहा है? सरकार, अपीजमेंट पॉलिसी है जी, चलो स्कूटी दे दिया। पर स्कूटी में पेट्रोल कौन भराएगा भाई? हैं? Yes, 130 रुपए का पेट्रोल कौन भराएगा? है ना। तो मैंने एक बहुत पहले आई रोट अ पोएम। उस पोएम के मैंने सुनाया था कभी आपको वो पोएम? नहीं सर। तो एक पोएम था मेरा, डॉक्टर हुसैन गौर कीजिएगा, ओके। कंटिन्यू। या किया था हमने वादा, पूरा हो या आधा, पानी की टंकी ना सही नल तो है लगवाए। ठीक है ना, ये नेता बोल रहा है जनता को। किया था हमने वादा, पूरा हो या आधा, ठीक है ना, किया था हमने वादा, पूरा हो या आधा, पानी की टंकी ना सही नल तो है लगवाए, इसलिए आपसे है अनुरोध कि दीजिए हमें ही वोट, ताकि मंत्री बनने के बाद इन नलकों में पानी भी आए। तो पहला इलेक्शन तो हमने इसलिए जीता कि हमने टंकियां बनवा दी, नलके लगवा दिए, पर उसमें पानी नहीं है भाई। अब तुम्हें अगले 5 साल हमको अगर लाना है, अगर पानी चाहिए तो ले आना। Yes. Okay. Now, the inner meaning, what the Neta was saying, the actual meaning, there is some limitation. He has gone and put his full stop, but actual, he will say that I Yeah, so I will have a in the first 5 have, years, yes, I have built you the about the water. The tap is there, but water will flow. It will take some time, another 5 years. for example, now everyone say there's a Tina factor, there's no alternative. You got the point? So what I mean to say is public health. I will give you another example. How governance will make a very important part in your project in public health. Now, what is the budget of Union Government of India? आपके हिसाब से कितना बजट है इंडिया का? इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना बजट होता है? Yes, anybody? तो जैसे गवर्नमेंट का ऑन एन एवरेज 2 लाख करोड़ का बजट है ना, मतलब 2 लाख करोड़ गवर्नमेंट का आता है। गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये हमारा बजट है, इस तरीके से। अब उसमें अगर हम यूनियन गवर्नमेंट का और इन सब का जोड़े तो वो करीब करीब आपका 36 लाख करोड़, ठीक है। तो 36 लाख करोड़ के अंदर जो यूनियन गवर्नमेंट जो काम करती है वो करीब 36 लाख करोड़ है। अगर पर आप इंडिया के बाकी स्टेट्स को मिला दीजिए, बाकी स्टेट्स को, नॉट 36 लाख, सॉरी 36,000 करोड़, तो जो अगर आप बाकी जो स्टेट्स को मिला दीजिए उसका कलेक्टिव बजट जो आता है वो आता है करीब 42 लाख करोड़। What I mean to say is every state will have their own. आप जैसे हेल्थ है, आपका ट्यूबरक्लोसिस प्रोजेक्ट है,
अब हर एक स्टेट, यूपी इतना बड़ा स्टेट है, 23 करोड़ की आबादी है, बंगाल में 9 करोड़ की आबादी है। अब बंगाल के अपने रिसोर्सेस होने चाहिए भाई, कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो हो सकता है 15% 20% सप्लाई कर देगा, बट बाकी का जो 70% है, 80% है, वो गवर्नमेंट को खुद रिसोर्सेस। अब वहां की गवर्नमेंट अब कितनी इंटेलिजेंट है, क्या उनके रिसोर्सेस हैं, वहां का जीडीपी कितना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना है, बीमारू स्टेट है, अच्छा स्टेट है, ठीक है, एजुकेशन का इंडेक्स क्या है, हेल्थ का इंडेक्स क्या है, सोशल इंडेक्स क्या है। लाइक केरला मॉडल गवर्नेंस में बहुत अच्छा मॉडल है, बिकॉज उनके पास में उनके रिमिटांस भी ज्यादा हैं, पर हाउस होल्ड से लोग भी बाहर ज्यादा रहते हैं, एजुकेशन का लेवल अच्छा है, हेल्थ का लेवल अच्छा है, सो नेचुरली वो अपने हिसाब से रिसोर्सेस को ज्यादा अच्छा कर पाएंगे एज कम्पेयर टू एनी। So you should be very clear about the various stakeholders who play an important role in that project. And who are the stakeholders? Stakeholders are defined as any person. It can be a person, it can be a group, it can be an institution that affects or is affected by the research. Okay, like सचर कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2005, उन्होंने कहा कि इंडिया में मुस्लिम्स की हालत लेस देन, मतलब इवन पुअरर, दे आर इवन मोर पुअरर देन योर दलित्स है, क्योंकि उनके अंदर तो ना इंडेक्स है, ना उनके अंदर पढ़ाई है, ना कुछ कुछ किसी भी टाइम में कुछ भी नहीं हुआ। सो दैट मीन्स दे शुड बी एम्पावर्ड मोर। अब इसको अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कल को एम्पावरमेंट का नाम दे दे, मींस अपीजमेंट का नाम दे दे, देन इट इज क्वाइट डेंजरस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ यू हैव गॉट 140 करोड़ पीपल, अगर वो 140 करोड़ तरीके से फंक्शन करेंगे तभी तो देश उन्नति करेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज, हु इज योर पावर? द पीपल। That's why I use that word, managing the people. अब वो चाहे people आपके अंदरूनी, if the people who are there within the system or outside the system. So they are the broad representative of the different interest groups. By bringing diverse parties to the PR process early on, there are chances for a more comprehensive identification of the relevant issues that will increase. क्योंकि डाइवर्सिटी को अगर आप प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, आप उनके सबके अलग अलग स्टेक होल्डर्स के इश्यूज को वो कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना होमोजेनस बनाने की कोशिश करें, दैट माइट फेल। There are n number of examples, because in a society there are people who are poor, there are people who are rich, there are people who are middle class, there are people who are overtly poor. So how can there can be an homogeneous group in a society? जब सबके स्टेक होल्डर्स अलग अलग टाइप है, किसी को ज्यादा सहारे की जरूरत होती है, किसी को कम सहारे की जरूरत होती है, जब उन सब चीजों में इतनी ज्यादा असमानताएं हैं, there are so much of inequalities, then how come then you can have all people with the same type of things? ये कॉमन सेंस की बात है ना। Is it clear? Yes, हाँ sir. सर, Yes, sir. हाँ सर। Okay, so you need to see any project. तो देखो मैं आपको ना दोनों पैरेलल आपको बता रहा हूँ कि एक हेल्थ केयर प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, एक कंट्री कैसे काम करती है, एक स्टेट कैसे काम करता है। क्योंकि आप प्रोजेक्ट को आप ऐसा नहीं, अल्टीमेटली अगर आप मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट का भी प्रोजेक्ट बना रहे तब भी आपको ये सब चीजें करनी पड़ेगी। अब आज की डेट में सारी पॉलिटिकल पार्टीज वो देखते हैं, अब इंडिया में जैसे यूपी का भी इलेक्शन में कास्ट सिस्टम है, भैया कितने ब्राह्मण हैं, कितने शूद्र हैं, कितने वैश्य हैं, कितने यादव हैं, कितने नॉन यादव हैं, कितने जाटव वोटर हैं, ठीक है, कितने मुस्लिम्स हैं, और उसकी कैसे। बट भैया अगर इतनी एनर्जी अगर लगा देते थे कि कितने बेरोजगार हैं, कितने रोजगार वाले लोग हैं, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा, कैसे करके वो आगे बढ़ेंगे, कितनी हेल्थ फैसिलिटीज, तो फिर इंडिया डेवलप नहीं बन जाएगा भाई। Exactly, sir. बट वो नेता को इन सब चीजों से मतलब नहीं है, क्योंकि अगर सभी वो चीज हो जाएंगे तो भाई फिर उसको कौन पूछेगा? उसका जरूरत नहीं है तो नहीं है ना भाई। डेवलपिंग का मतलब ये, जितने लोग गरीब रहेंगे उतना उसका, क्योंकि देन ही विल हैव ऑल द मसल पावर एंड द, तब सो दैट ही और शी कैन रूल ओवर एनीवेयर। ये वर्ल्ड, ये मैं नहीं बोल रहा, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में आप कहीं पे भी देखेंगे उस तरीके से। द सेम आल्सो वर्क्स इन पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट्स, कि आपने एक फंड को एलोकेट कराया, उसका बजटिंग कितना है, आपके उसके बेनिफिशियरीज कितने बनेंगे, कितना पैसा आपका एलोकेट किया जाएगा,
अब आप कोई पब्लिक हेल्थ के प्रोजेक्ट में सपोज आपका 1 करोड़ अगर आपको एलोकेट किया जाएगा, तो कम से कम भी उसका एक्सपेक्टेशन होगा कि कम से कम भी 5 करोड़ या 7 करोड़ के बेनिफिशियरीज आपको मिले। तो आप बोलोगे यार 1 करोड़ का, ये थोड़ी ना बोलेगा कि 1 करोड़ लगा के आपको 50 लाख बेनिफिशियरीज, मतलब 50 लाख की वर्थ आपको बेनिफिशियरीज मिले। ऐसा कभी भी पब्लिक हेल्थ में नहीं होता। इसलिए पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल की इंटेलिजेंस इसमें चलती है। इट इज समवॉट like Manmohan Singh, when the entire world was facing financial crunch, his policies were helpful, good enough that we are able to survive in the 2008 financial crunch which affected the entire world. So देखिए, जो वाइज होगा वो अपनी पॉलिसीज से इन चीजों को डिसाइड करेगा। द सेम थिंग विल हैपन व्हेन यू विल वर्क इन द एरिया ऑफ पब्लिक हेल्थ, कि आप किस तरीके से उन पॉलिसीज को बनाते हैं। उसके लिए आपको इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। आपको सब्जेक्ट नॉलेज, मैटर एक्सपर्ट होना जरूरी है। आपको सिस्टम और प्रोसेसेस का पता होना चाहिए, आपको टूल्स का पता होना चाहिए, आपके अंदर उसके एनालिटिकल स्किल्स होना चाहिए। तभी ना कोई आपको बोलेगा कि ठीक है आपकी 3 लाख रुपए महीना तनख्वाह है, वरना तो 15-20 हजार वाले बहुत बैठे हुए मार्केट में। ठीक है ना। तो और जो वेस्टर्न वर्ल्ड इन सब चीजों को करता है वो ऐसे ही नहीं करता, उनको पता है इन चीजों को। ओके, इज इट क्लियर? Okay, हाँ sir. सर। Okay, so PR will also intend to enhance the capacity of different stakeholders to mediate their own conflicts and represent their own interest in the wider social and the political arena। देखिए यहाँ पे भी वही चीज दिखी है, क्योंकि when you are a part of society, you have to take care of all these things. So in some cases researchers, मतलब अब देखिए मैं बार बार करके इस पॉइंट को हाईलाइट करता हूँ कि आज हम कहाँ पे हैं, और क्या आज हम मतलब हिंदू मुसलमान कास्ट की लड़ाई, पॉलिटिक्स, बट ये रियलिटी है समाज की। क्योंकि लोगों को नहीं, बिकॉज दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। जब कुछ अगर आपको किसी का ध्यान भटकाना है, अगर आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो सीधा सीधा लोगों को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, विच अंग्रेज बहुत पहले बता के चले गए। तो ये इस तरीके से, तो इसलिए पॉलिटिक्स, पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट, ये सब एक ही सिस्टम का पार्ट है। तो इसलिए ये सब चीजें आपका पब्लिक हेल्थ रिसर्च के अंदर ये चीज आती हैं। ठीक है। सो इन सम केसेस रिसर्चर्स में चूज टू वर्क विद वन ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स टू इन्वेस्टिगेट द इश्यूज। तभी इसके लिए इंजेंडर्ड लॉग फ्रेम, जैसे मैंने आपको बताया था, कि अगर मान लीजिए वही इश्यूज हैं, वो इश्यूज मेल को कैसे इफेक्ट करेगा, फीमेल्स को कैसे इफेक्ट करेगा। अगर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन आपको बनाना है, तो आप ये देखें वो इश्यूज हिंदू को कैसे इफेक्ट करता है, मुसलमान को कैसे इफेक्ट करता है, सिख को कैसे, माइनॉरिटीज को कैसे। मुसलमान का मीन्स आई मीन टू से माइनॉरिटीज ओवर हियर, maybe Sikh, okay, because when you have got majority of people of one and the other, so maybe the same issues may affect them in a different manner. The same issues may affect in terms of like the NCFC regional centers may work with one group of stakeholders such as like forest workers, like America के अंदर Native American tribes हैं, country commissions हैं। So in these, so there are different categories of stakeholders. So you can make various cohorts for this. Suppose you have some policies for the children. ठीक है। अगर आप मान लीजिए आप पब्लिक हेल्थ का प्रोजेक्ट मैं बनाता हूं कि मेरे को स्पोर्ट्स को लोगों की लाइफ का एक पार्ट बनाना है, तो मेरे को कैसे, हमें नजर आ रहा है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ती जा रही है समाज में। So suppose, so I have to make policies in terms of people. I have to not only have to just make policies in the parliament, I have also, or the legislative assembly, I have to see that how these policies are being implemented into the lives of the people, of a common man, and how they are being implemented, what type of a result they are expected to bring, how they are being evaluated, and what is the final outcome at the end of the day after because it will use various type of resources. It will use infrastructure resource, it will use financial resource, it will use manpower resource, isn't it? और अगर उसके बाद में भी नतीजे अगर सेम नहीं निकले, तो फिर बताओ कैसे काम होगा। It will be a wastage of time, effort, money, everything. So public health is a huge thing. It's a very
It has got a very holistic approach, and it is applicable in any sphere of life what you can just think of. Okay, is it clear? Yes, sir. And that's why it is written stakeholder participation will mean active involvement right from the conceptual stage of research. आपको उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा भाई. अब जैसे किसान आंदोलन ले लो इंडिया, अब भाई आपने पॉलिसीज बना दी, सब कुछ बना लिया और किसान से ही नहीं पूछा, बिकॉज आप कॉर्पोरेट को फेवर करना चाहते हैं. अब उन्होंने जब आंदोलन के 1 साल, आप बोल रहे हैं कि नहीं भाई हमने वापस लिए, बट अब आप नया ग्रुप बनाएंगे, फिर उनसे कंसल्ट करेंगे, फिर हम उसको देखेंगे उनको डे 1 से कि भाई आपकी प्रॉब्लम्स क्या है. अब आप कह रहे हैं भैया मैं सब कुछ जानता हूँ, बट अगर आप सब कुछ जानते हैं भाई उनकी भी तो बात सुनो. इट इज समथिंग लाइक you are going to a doctor, you are explaining your problem, and the doctor is least interested to listen to your problem. He is only thinking about what he wants to write on the prescription sheet. तो आप बाहर आके निकलते यार बेकार डॉक्टर है यार. लोगों ने कहा नहीं यार हमने तो सुना था बड़ा अच्छा डॉक्टर है, बहुत मतलब उसकी फीस बहुत ज्यादा 1000 2000. कहता है वो 2000 ले बट मेरे लिए बेकार है, उसने तो मेरी बात ही नहीं ठीक से सुनी. Yes or no? Yes, yes. Yes, sir. Okay. So stakeholder participation means active involvement right from the conceptual stage of the research and including identifying the research questions. Here from यहाँ से आपको research question बनाना बहुत जरूरी है. Research question में 2 टाइप के concept होते हैं, एक background questions होते हैं, एक foreground questions होते हैं. Write it down. When you frame the research questions into your research, so there are background questions and there are foreground questions. What is the background questions? Background questions वो questions हैं जो already स्थापित है. इस जगह की demographics क्या है, किस टाइप के लोग यहाँ पे रहते हैं, उनका gender wise segregation क्या है, उनका religion wise segregation क्या है, उनका socio economic wise segregation क्या है, middle class लोग ज्यादा रहते हैं, है ना, upper middle class ज्यादा रहते हैं, poor class कैसे रहते हैं. तो ये information already available रहती है, जैसे census में किया जाता है. अब वो हर 10 साल में जब सेंसस किया जाए तो आइडिया लगता है वो चीजें कैसे बदल गई पिछले 10 सालों में. सेम वही रही, उससे बढ़ गई, उससे कम हो गई, तो इट विल गिव यू सर्टेन इन्फॉर्मेशन. दिस इज द बैकग्राउंड क्वेश्चन. फोरग्राउंड क्वेश्चंस वो हैं जो आपको एस्टैब्लिश करना है, जो आप करवाना चाहते हैं. तो उसके लिए आप उस देखते हैं कि सेम टाइप की चीज कहीं और पे की गई कि नहीं की गई. अगर की गई तो वहां पे क्या रिजल्ट निकले थे. सो यू आर आस्किंग क्वेश्चंस. उन्होंने जो इम्प्लीमेंट किया उस इंफॉर्मेशन में उन्होंने जो रिजल्ट निकाले और आप जो रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है या डिसिमिलैरिटी है. सिमिलैरिटी है तो कितनी है, डिसिमिलैरिटी है तो कितनी है, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन से आपको बहुत कुछ करने को मिल सकता है, आपको नई इंफॉर्मेशन मिल सकती है जिससे आप शायद वो गलतियां ना दोहराएं जो उसने दोहराई थी. ओके. So it goes far beyond just notifying or informing the community members about the research. ये सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ अपने स्टेक होल्डर्स को बता दी भाई मैं ये कर रहा हूँ. उनको एक्टिवली आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज ओनली थ्रू देम दैट इट विल बी सीपिंग इनटू द कम्युनिटी. जो आपका प्राइमरी गोल है कि उसके अंदर डिजायर्ड बेनिफिट्स लाए जाएं, उसके अंदर डिजायर्ड बिहेवियरल चेंजेस लाए जाएं, ताकि आपका टारगेट अचीव करने में इजी हो, आपका विजन अचीव करने में इजी. इज इट क्लियर? यस सर. एनी क्वेश्चन? Any question from anyone? There is a word called general strategy. I think we have this in the module also, and we have one. There is a word, the strategy. So, yeah. What is the difference between this general strategy and this strategy? What they are saying? See, strategy, general strategy would be a general formula. That means the method, no? The plan you are method. No, yes. But method, see, there are 2 parts. One is methodology, other is the method. Under methodology, there could be 5 different types of methods. For example,
For example, like just now I told you, what you are doing, you are basically managing the people. Now, Yeah. managing the people, there are a group of set of people that are quite intelligent. So there you need not to order, but there you should be engaging with them in terms of identifying the key areas, and then with their information, you need to you need to clear cut a strategy which might work, because here everyone is learned enough and they are all intellectuals. Yeah. But for the another group of people who might be working in a stakeholder, okay, there you need to command certain things. There you should tell them, you need not to put your own mind, but what I am saying, just follow this. Now see, or different group of people, but here the methodology change, here the method changes. Okay. Okay, so in the first group set of people, you used a participatory method, where there was a dialogue, there is a discussion of the ideas, how it is going to Meetings work. and all this. Yes, but in the other one, you use more like a dictatorial system, because you told them, don't put your head, what I am saying, just do it and get this information too. Yeah. Okay, in the third category, you might have to use both. Okay, so you see, the methodology will have a different set of methods. So when I talk about a strategy, so this is the key difference between a general strategy could work like a methodology, but a particular strategy could be one of the methods for the same. Is it clear? Yes, Dr. Hussain, is it clear? Yeah. Please. Okay. So you see, strategy identify all stakeholders which are affected by the research, regardless of why parties choose to be involved. It is crucial that their participation is treated with respect. This is what is very, very important in public health. Even you are working with those people who make the bottom of the pyramid. They are the poorest of the poor. Still, you should treat them with respect. We should empathize with them. We should understand their pain. Okay, so this is what about treating everyone with respect. So for this, make a list of stakeholders using the following question. So you will use various tools. Okay, for the tools, you first need to frame up the questions, like who is affected by this research, who are the primary stakeholders, who are the secondary stakeholders, who are the various institutions that may affect the overall outcomes of the result, or that can affect your decision making. Are these stakeholders would be involved, but they need support? Yes, they may be involved, they may not be involved. If they get involved, what type of a support would they need? How it will be provided? What type of a political or institutional change agents are being represented? Okay. What is this change agents? Change agents means they are those actors or players who can affect the overall outcome. For example, I want to, it is something like, I will tell you. Arvind Kejriwal is in Delhi, okay, and the central government is a BJP government. Now, the lieutenant governor is from the central government, the chief minister is from Aam Aadmi Party. Now, they want to change certain things in the governance of Delhi, but for the same thing, they need to take a permission from the center. The center will understand the idea, but may or may not give the permission, because they know this is a brilliant idea. But if they give the permission, then automatically the benefit or Aam Aadmi Party will become a hero in the eyes of the public. Now see, because the budget, the people will say but the budget will be provided by the state government or the central government, maybe some part. But if the central government provides some budget, but the main
recognition or the prize is being taken by the Aam Aadmi Party, then the central government won't like it. So what I mean to say is there are various type of dynamic forces which acts in when you talk about public health. They may be political in nature, they may be socioeconomic in nature, they may be different in their ideologies. And but then you need to create a dialogue between each of them so that it becomes a working thing. Now, for example, in a public health project, if suppose for an institutional delivery, the females are the main workforce which can bring about some change, but they are not allowed by the male counterparts, by their male husband or the brother or somebody, to take decision in the family regarding their own reproductive health. So how you can see a change in the society? So what you mean to say is, yes, you have to empower the women, but at the same time, you have to also create a dialogue with the male community so that they can understand this importance. They are ready to bargain the power equation, and they can give a little bit of relaxation so that they can make a decision, and it can be beneficial for the overall family and for the overall society. This is how the change agents are being represented. Is it clear? Change agents can be from the one of the stakeholders, I mean from the government side also, and from the From the local government. from the local Yes. community also. If suppose government frames a policy in such a manner that it makes it mandatory. For example, if the government makes like all those females, for example, take this government. This government has initiated a project called that Awas Yojana. Now in Awas Yojana, they are constructing houses for the families. So which is a good initiative, because there are a lot of homeless people. Unless and until the people, suppose if somebody has a house and that house is being already has a house, and he takes another house and he sold this house or something like this. So now suppose if the government has made this as a policy, what the government is ensuring that the houses has to be allocated in the name of the female and not the male member. So then what happens? The female is basically quite assured that nobody is going to chuck me out of the house. So this is type of a change agent. It is bringing about empowerment. Nobody can, and she won't be homeless. So suppose if her husband dies, or maybe she is being treated badly in her in-laws, but then if she is the owner of the house, then definitely she has something in hand, and irrespective of somebody likes it or not, but then she would be having some power equation. So the government over here, with this decision that all the new houses will be allocated in the name of the female members, is like a change agent. Is it clear? Thanks. Okay. So you have to contact the different stakeholders to involve them in research. You have to plan how to. So see, these are simple sentences. When you read them, you can understand the meaning. But it is when you do it practically in a field, it is not a very easy task. It is quite challenging to make a very, very robust type of a model, to make a very compact model, so that, and then all the points will be interrelated with each other, so that you can see certain certain benefits out of them. So you have to contact these different stakeholders to involve them in research. You have to plan how to approach them.
Suppose you are going to do any type of a, take the example of Swades movie. Okay, so there they wanted to bring about certain change in a village so that the females can be empowered, and there is a caste politics. So females, so in order to create, certain change in the society, the females have to be empowered. Those communities have to be empowered. And what is the power dynamics within those communities? How Brahmin Samaj is going to be different from a Shudra Samaj, or from a Shudra Samaj is different from a Vaishya Samaj. How the other backward class is going to behave in that village. All is related with the females. But then, because of the caste politics, maybe some communities may be finding more, I would say, bottlenecks as compared to the other communities. And if there's a difference in the bottlenecks among different communities, then more support has to be provided to those communities where the bottlenecks are moved, as compared to the other communities where ultimately the objective is the empowerment of females through education. The main goal is the same, but the same goal may be treated very differently in terms of the various communities. So then you have to talk to them individually about a general topic of concern. You have to ask if they are willing to meet with others. You have to use a snowball method. Now, snowball method is basically a method of your non-probability sampling. Okay, when I will be teaching you research methodology, means statistics, then it is a part of your snowball method. So how is the snowball method works? It is like, for example, if I have to use any statistics for a cancer patient in order to do cancer research. So now I go to a cancer research patient, I take all his data, all his information, and then I ask him, do you know any other person who is also suffering from cancer, or you a member of any other, or suppose if I'm taking some project, I want to make some new project on multiple sclerosis. So I might ask some person, what are the problems, like what type of do you face, what are your general inhibitions, what things do you fear, and then I might ask the patient, are you a member of some other multiple sclerosis society where I could get same type of a patient with the same, different, means the orientation of different diseases, or orientation of different times within the same disease. But then I make a complete cohort group, and there I am using this snowball method. So snowball method, in other words, could be called as a reference method. It is a reference method of sampling. Is it clear? Is it clear to everyone what is a snowball method? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I'll teach you. And so when I teach you sampling, probability sampling, non-probability sampling, what is quota sampling, snowball sampling. In your probability sampling, you will be finding your systematic sampling, stratified sampling, okay, random sampling. So we'll be speaking regarding the same. So you have to use a snowball method to find others. So that is through reference, we are finding others. That is to find information about the other stakeholders from the ones that you have just spoken to or talked to. And you have to make it clear that how they are going to be benefited by participating in the research. You have to use some of the reasons in the box below to explain the benefits from the participating in the research. Now, what is the benefits of participating? Why you have to ask the various stakeholders why you should participate in research. Because suppose you are going to make any methodology, you have to make any project, but first you should know how to participate in the research and why you should participate in research as a student. Because it will give you control about how research affects their lives. What is the role of research? Because research will give you new information, new areas, or you can explore new areas which might significantly affect your outcome. And then you have to see in terms of when you speak to the people, you have to explain them about ownership in terms of design, the process, and the results. Because at the end of the day, it is basically the commoner who is going to be affected.
So if you have got a bhagidari concept in working with the government and working with the stakeholders, so definitely you will have a control over the entire process and you will know how to manage it. And then for this, you have to learn new research skills, you have to build relationship, networks. So again, it is like managing the people and the processes. Okay, so if you put and manage the people, the project, the processes, the projects, and the budget, so all of these can be put it in one of the categories. So you can build the relationship and the network. You can recognize different perspectives. Okay, you can in terms of reducing the conflicts between the people, and you can increase the chances of success. You can find the usefulness of this research in the at a community level, and you can verify the various assumptions, like what are the reasons for which whether this project was successful or not successful. So if you are at a very unbiased method in way, if you try to understand the overall phenomena, okay, and then you try to see the things quite objectively, then it is going to give you certain answers regarding the reasons for whether this project worked efficiently or it did not work. And if it worked efficiently, then what were the reasons? And if these were the reasons, can it be replicated in some other part? For example, if you used a good institutional delivery model for a district in Odisha, so whether you can use the same model in the other districts of Odisha, or if it has been successful, the same new model is being successful in all that in the majority districts of Odisha, can it be also be replicable in the state of Andhra Pradesh, where maybe your demographics will be a little different from the demographics in Odisha. And if the and here when you implement the same system, it may work or it may not work. It is same like the Gujarat model with which the BJP was talking, or the Aam Aadmi Party model in Delhi. So these are all models. Somebody will say, this model can bring about a sense of the people will feel uplifted, the people will feel that they have been basically the beneficiaries of all the projects. So that's why the stakeholders should participate in all different types of research. Yes, is stage 2 clear to everyone? Yes, sir. No. So I think like you have been Quite able clear, to quite understand, clear. because you have to understand the soul of the method. Okay, understanding the soul is very important, because see, at the end of the day, if such a question, suppose a 15-mark question is being asked, what are the various stages, so you can write the answer. But then what is even more important than just writing the answer is to understand it in totality, and how you are going to use the same thing in public health when you are doing a real time project. Is it clear? Okay. So then comes the stage 3, that is building trust. Okay, so this is again very important, because how do you basically build trust? Okay, so unlike because unless and until you build trust, you cannot bring about tangible change. Okay, so public health project is all about like building trust. Unless and until the people trust you, unless your credentials are being very trustworthy, you cannot make a public health project work in a community. For in a community, the people, the Anganwadi workers, the real stakeholder workers should believe you. They should believe your ideas. They should know about your mission, about vision, what you're trying to achieve, how you're trying to achieve, what type of a benefit it is going to them. Okay, how the societies can be transformed because of this. And based on this,
you build about the trust in the at the community level. So unlike the conventional research process, developing the research question is not about starting of the research PR process. So, but building trust is a necessary stage prior to the developing of the research question. Unless and until people trust you, unless and until people like you, okay, unless and until people understand the reason why you want to go ahead with this. So, because the ultimately, if you're making a new research question, but people does not give you the right answer for that, so definitely your objective is not achieved. Okay, that's why it is written that building trust is a necessary stage and has to be developed prior to the developing the research question. So it is prior. And then building community members trust in the research project, because see, every community will have certain senior members of the society who are going to play an important role. So if you take community members along, okay, and they know each and every stage of the process, which is very crucial for the PR. So, but here, in order to get the maximum benefit or maximum return, you should know, have patience and need to take the things in a very systematic manner. So it will, because it will take a lot of time, and you should have the patience for the same. So for building trust, the strategy may be to create a space for the info. So there could be informal type of communication where this information can be given by southern other members of the same area. Okay, and then there can be gatherings, there can be get together over food, there can be field visit. Now suppose if I want to make a I would say, like, I want to develop a trust in it, so I might invite them for some discussion. I might want to use different type of an unorthodox methods for collecting the data. Okay, I might be using different type of methods in order to know the mindset of the people. Okay, I might have informal meetings. I might go on field visits. I might have different type of training sessions. I might take the email IDs of all the members. Okay, so in order to create this trust. And then once this trust is created, then we have to make the common understanding. So this is the CMP, common minimum pathway. So we'll do this stage 4 in the next class. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Any This questions, any this doubts? this building of trust. I mean, you have to gain confidence of people in the different stakeholders, Yes, you have to gain. and you have to they have to be taken in this such confidence that the way we are the strategy which we are adopting, that is more or less they are actually in the actual pathway leading to the successful outcome. And Okay. more and more communications should be done with the stakeholders, members of the stakeholders, and getting more and more intimated. Uh, this will this will be a practice of establishing good relationship between the different people, so that they will be very much. I mean, they will be at a liberty to express any types of questions which they come across, or any type of queries if they have, they may put forward to you so that it can be explained to them. All these endeavors definitely will gain the intimacy. I mean, they should build up strong relationship. Yeah, and in order to work, so these are some of the methods. But see, well, in today's world, what I would say, which is even more important than this, is to create a database of such people.
Okay, first you should have the database. How many people in the community? What type of a demographic, socio-demographic area? Which how do their behavior is being influenced? So if you have got all these parameters in place, that's why technology will play a very major role in public health and its implementation in the coming years, because then it will also give you certain information that the cohort groups that you're talking about, when they are enthusiastic, when they are sad, when they are excited, okay, when they are when it is easy for them to make a decision. Okay, when in which circumstances do they behave differently? If they do behave different, and why do they behave differently? What were the parameters for the same? Okay. Yes. Any other questions? सर वो हाँ, जो लॉग फ्रेम आपने भेजा था वहाँ पे सर एक क्वेश्चन था, ट्री का मतलब यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया। ट्री। लॉग अच्छा, चलो मैं इसमें निकालता हूँ, एक मिनट बता देता हूँ। वो प्रॉब्लम ट्री कहलाता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ट्री भी एक टूल होता है अलग से। तो तुम ओके, हाँ, सबको नजर आ रहा है? यस सर, यस सर। तो देखो, ये लॉग फ्रेम क्या है? एक टूल है। वो मैं तुम्हारे को एक रफ एस्टिमेट तो मैंने बता ही रखा है, बट ये क्या है, इससे हम किसी भी एग्जिस्टिंग सिचुएशन को प्रोजेक्ट प्रिपरेशन के दौरान यूज कर सकते। जैसे मेरे को अगर कहीं पे मटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना है, ट्यूबरक्लोसिस को कम करना है, तो मैं इस टूल का इस्तेमाल कर सकता हूँ, बिकॉज ये मेरे को एक लॉजिकल हायरार्की देगा बाय विच द ऑब्जेक्टिव्स विल बी रीच्ड। इट विल ऑल्सो, तो मैंने आपको बताया था कि विजन, मिशन, आउटपुट, इनपुट, ओवीआई, एमओवी एंड थ्रेट वो पार्ट होता है जिसके वजह से आपकी कोई भी प्लानिंग गड़बड़ हो जाएगी। आप चाहे कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट बनाओ, बट सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द वेरियस थ्रेट्स, और उसके लिए आपको आपके पास में क्या रिसोर्सेस हैं दैट यू कैन टेक केयर ऑफ ऑल दोस थ्रेट्स। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये मैं और आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा जब आपके टूल्स चलेंगे, बट अभी आपको जिस सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए इसलिए मैंने इसको दिखाया। सो ओके सर। इस पे आपके आउटपुट, आउटकम है ना, क्या निकल के आते हैं आपका, और इसके एडवांटेजेस की हमने बात की कि भाई बेसिकली ये हमको एक प्रपोजल बना के देता है। तो ये आपका, देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में गोल, पर्पस, आउटपुट है। सो इसको हम विजन बोल सकते हैं। विजन तो गोल की जगह मैं लिख सकता हूँ, बट विजन जो है मेरा लॉन्ग टर्म जो मिशन मेरा है कि द पर्पस फॉर विच वी आर प्रेजेंट, है ना, हमारा किस उद्देश्य के लिए हम यहाँ पे हैं, तो वो यस। हमारा पर्पस हो गया एक तरीके से। और मैं कहाँ तक जाना चाहता हूँ, है ना। जैसे मैंने अगर आज एक संस्था खोली, तो मेरा पर्पस ये है कि आई वांट टू बी नंबर 1 इन द मार्केट। तो हमने कहा कि भाई अब मैं मतलब भाई मैं अकेला थोड़ी ना होऊंगा कि भाई मैं आई एम जस्ट प्लेइंग द रोल ऑफ अ टीचर, बट एट द एंड ऑफ द डे जितने हमारे स्टूडेंट्स बाहर निकलेंगे, जितना अच्छा उनको एक्सपोजर मिलेगा, जितनी अच्छी उनकी नेटवर्किंग होएगी, जितना अच्छा उनको एक तरीके से क्लैरिटी होएगी, तो उतना भाई आपका इंस्टीट्यूशन ग्रो करेगा। तो विजन हो गया, मिशन होगा, आउटपुट हो गया, और इनपुट हो गया। इनपुट के अंदर हम एक्टिविटीज लिख लेंगे, किस स्टेप कौन कौन से है, क्या क्या काम हमको करना है। सो दीज आर द टास्क दैट हैज टू बी डन टू प्रोड्यूस द आउटपुट। देखो आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है एक्टिविटीज। यस सर।
जब मैं बात करता हूँ मेजरेबल इंडिकेटर्स को, मेजरेबल इंडिकेटर्स का दूसरा नाम होता है OVI। तो उसके ऊपर आप एरो डाल के लिख सकते हो OVI। व्हाट इज O? इट इज ऑल द फुल फॉर्म ऑफ OVI स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइबल इंडिकेटर। इंडिकेटर जैसे आपको अगर बुखार आया तो आपका इंडिकेटर क्या होगा? थर्मामीटर। आपको पता चलता है बुखार ज्यादा है, कम है, तेज है। अगर आपके रेंज ऑफ मोशन अगर इफेक्ट हो गए तो आपको गोनियोमीटर से पता चलता है। तो सिमिलरली अगर आपको पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो आपको अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स बनाने पड़ेंगे। जैसे इंसिडेंस रेट एक तरीके का इंडिकेटर है, प्रिवलेंस रेट ऑफ दैट एरिया एक तरीके का इंडिकेटर है, ओके, एंगेजमेंट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स एक तरीके का इंडिकेटर है। तो ये आराम से इस तरीके से आपको इंडिकेटर आपको इंडिकेट करके बताएगा कि आपकी चीज आपके टारगेट पे है या नहीं। वो वैसे ही जिस हिसाब से आप चाह रहे थे वो ग्रो करे, क्या वो ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो इंडिकेटर जो होता है वो स्मार्ट इंडिकेटर कहलाता है। स्मार्ट इंडिकेटर का मतलब होता है कोई भी जो इंडिकेटर होगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को भी हैंडल करने के लिए उसके जो इंडिकेटर की जो वैल्यूज होंगी वो स्मार्ट इंडिकेटर कहलाएंगे। तो स्मार्ट इंडिकेटर का क्या है? S stands for specific, M stands for measurable, A stands for accurate, ठीक है, R stands for realistic and T stands for time bound। तो आपका कोई भी इंडिकेटर जो आपको बता रहा है, विजन का इंडिकेटर, S for specific, M for S for specific इंडिकेटर जो आपको करना चाहिए, जो ये जो लिखा हुआ है ना मेजरेबल इंडिकेटर, तो इट शुड बी मेजरेबल। तो इसकी प्रॉपर्टीज को स्मार्ट बोला जाता है, SMART, स्मार्ट। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल होना चाहिए, A फॉर नॉन स्पेसिफिक रहता है, S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर एक्यूरेट, सॉरी, A फॉर एक्यूरेट, R फॉर रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइम बाउंड। स्मार्ट। ओके सर। फिर MOV हो गया, मींस ऑफ वेरिफिकेशन। आप उसको वेरीफाई, जैसे हम मैथ्स में इक्वेशन में करते थे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो LHS आपने निकाला, RHS क्या है? आप मतलब आप जो बात कह रहे हैं उसका वेरीफाई आप कैसे करोगे? उसको क्रॉस चेक कैसे करोगे? ठीक है, तो आपको मेजरेबल होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। और फिर मींस ऑफ वेरिफिकेशन मैंने बताया कि जो जिसके थ्रू आप उसको वेरीफाई करेंगे, है ना। तो जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि भाई इतने बेनिफिशियरीज थे, है ना, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई इतने ज्यादा, जैसा अभी कोविड के टाइम पे आज ये रिपोर्ट आई है कि इंडिया में 4.1 मिलियन लोगों की मौत हुई, तो करीब 40 लाख लोगों की मौत हुई। गवर्नमेंट ने कहा 4 लाख, बट द WHO did not basically accept this point, and they verified it, and they told India like the total number of deaths were around 4.1 million, which is the highest in the world. Okay. Yes sir. एंड देन इम्पोर्टेंट अजम्पशंस, यहाँ पे रिस्क, आप इसको रिस्क भी ले सकते हैं। रिस्क वो पॉइंट्स होते हैं जिसके वजह से आपकी जितनी भी प्लानिंग है वो सब डूब जाएगी, जो प्रॉब्लम में आ जाएगी। ओके, सो ये हो गया थ्रेट्स, वो थ्रेट्स हो गया। एंड हाउ टू गेट टुगेदर, तो ये मैंने आपको बताया ना प्रॉब्लम ट्री। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम ट्री बनाना पड़ता है। वो प्रॉब्लम ट्री क्या होता है मैं किसी क्लास में पढ़ाऊंगा आपको। ओके सर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ट्री, ऑल्टरनेट, तो ये सब अलग अलग टूल्स है। जैसे मैंने आज आपको टूल दिया, ज्ञान चार्ट है, आपका बजट हो गया, है ना, आपका ये हो गया, पर्ट हो गया, CPM हो गया, ये सब अलग अलग टूल्स हैं। उस तरह प्रॉब्लम ट्री भी एक तरीके का टूल है। ओके सर। ओके ओके, ओके सर। ये हाउ टू गेट देयर का मतलब है वहां तक। ये जो अगर पूरा आपको ये नक्शा बनाना है तो हाउ टू गेट देयर, उसको कैसे बनाए आप, ये है। ओके सर। ओके ओके, थैंक यू Okay, यस, sir. सो सी प्रॉब्लम ट्री है। Sir, will you please share the slides for today's Huh? class? Sir? Will you please share the slides that you have taught us today in the WhatsApp group? ये तो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू इन द ग्रुप थी, वो मैंने 2 बुक्स दी थी, उसी में से ही पढ़ा रहा हूँ, उन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Okay, sir. देयर इज नो अदर डिफरेंट स्लाइड्स, है ना। अगर Today कुछ होगा तो आई विल जस्ट शेयर विद यू। अब step जैसे one, जैसे
MPH 1, 2, 3 that you have taught us today? Yeah, I've already shared in the WhatsApp group. Check last to last week, I think I shared. Okay, thank you. Okay, so we'll all take a leave then. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay, thank you so much for your Thank you so time. much. Thank you so much. Thank you, sir. Okay, take care. Good evening, good night. Okay, Okay, sir. we'll be next week. Okay, sir.